and the other one is going to be defined by 1 minus this. Right? Okay. Let's like digest this log function now. Log के बारे में हमने कभी बात तो की थी. So like you are pretty used to say that log is what is log 2? What is log 2? Two. Wrong. 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 Like I don't look at the table of logs, then how can I be so sure about like you're saying wrong? Like you're calculating it from calculator and I'm still saying you're wrong. And I'm so sure about that. Because you are not even using the calculator correctly. So I'm saying log 2 base 2. I'm not saying log 2 base 10. So usually the default base that the calculator is using 10, but I'm talking about log 2 base 2. So what is this? 0.3. This might be 0. Whatever you are saying. 0.3? Okay, 2 raised to power 0.3. 2 raised to power 0.3. 0.4. 2 raised to power 0.3. Sorry. That will be smaller now. Okay, log 2 base 2 is 1. Why is it 1? Because taking the log of a number means you are asking what power of base will give you this number. So what power of 2 will give you this number? 1. Log 4 base 2 is 2 because 2 raised to power 2 will give you 4. Log 8 base 2 will give you 3 because 2 raised to power 3 will give you 8. And log 16 base 2 is 4 because 2 raised to power 16 will give you 4. What is log 10 base 2? We don't know, it is somewhere between 3 and 4. It's a fractional number between 3 and 4, right? Okay. ये बात आपको last time भी समझाई थी. At least you should keep the concept in your mind. Okay. अब अगर आप log function को plot करें, so for example if you have like axis like this, right? और आप इस पे log को plot करें with base 2, with base 10, whatever, the shape of the log will go like something like this, where this is 0.1, right? The shape of log will be like log. For example, this function is like log of x, right? This is your log of x, right? Okay, like let's just call it. For example, x. अगर हम इसके x axis कह रहे हैं तो f. In that case, it is f. You can call it f. So what does it mean? Log 1 का क्या मतलब है? Log 1 कब आ रहा है? जब x axis पे value है 0. Because 2 raised to power 0 is 1. Right? 2 raised to power 1 is 2. तो यहाँ पे value 2 आ जाएगी. Right? 2 पे जवाब जाएंगे. So on so forth. So the log will be shaping like this. No matter what the base you use, the shape will be like this. Magnitude can be different, but the shape will be the same. Because power function है, तो power function एक ही तरीके से shape लेता जाएगा. Right? Now this is log. Now if this is log, the negative of the log will be exactly opposite of this.
If this is log, this is negative log, right? Direction उलट हो जाएगी इसकी सिर्फ, ठीक है? Another important thing, we are talking about classification, and the values within the classification range from 0 to 1. That means we need only this part of this function and not the remaining part. हमें सिर्फ ये पार्ट चाहिए 1 तक का, बिकॉज हम 0 से 1 तक की वैल्यूज में इंटरेस्टेड है, उससे ज्यादा की वैल्यूज हमें चाहिए नहीं. So like this is going to be the shape of negative log and this is going to be the shape of positive log. So that means if we are talking about negative log, this is the shape that we are living with. So from 0 to 1 it is going like that. अगर हम इसको थोड़ा बड़े स्केल पे बना लें, तो this is going to be something like this, where this is 1 and this is almost 0 here, right? So negative log is going to take this shape. And we were talking about that the value of the loss function is minus log of the prediction, when y is 1, right? So that means in this case, if the prediction is 1, loss is 0. हमने प्रेडिक्ट 1 किया है और एक्चुअल लेवल भी 1 है, तो लॉस 0 होगा, ठीक है? लेकिन अगर इस केस में हमारी प्रेडिक्शन 0 हो तो लॉस विल बी मैक्सिमम, यानी हम बिल्कुल ऑपोजिट प्रेडिक्शन कर रहे हैं कंपेयर टू द एक्चुअल लेवल. तो वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है? 0 एंड 1. अगर आपकी एक्चुअल वैल्यू 1 है, प्रेडिक्शन भी 1 है, तो लॉस 0. अगर आपकी एक्चुअल वैल्यू 1 है और प्रेडिक्शन 0 है, तो लॉस मैक्सिमम, राइट? वेरी बैड, as bad as you can, right? Okay. On the contrary, अगर आप दूसरा केस देखें, इस केस में आप क्या करते हैं? 1 माइनस दिस कर लेते हैं, right? In this case, it will go like this, right? अब अगर आपकी प्रेडिक्शन 1 है, मैं इसको ठीक कर देता हूं. अगर आपकी प्रेडिक्शन 0 है, हमने कहा था कि ये वैल्यू तब होगी जब एक्चुअल लेवल 0 है. तो अब अगर एक्चुअल लेवल 0 है और आपकी प्रेडिक्शन भी 0 है, तो लॉस भी 0 है. लेकिन अगर आपकी प्रेडिक्शन 1 है, तो आपका लॉस मैक्सिमम, right? So this is what the loss function looks like in this case. So we were using some of the squares of the errors as a loss function for linear regression. We were using that function, we were finding it suitable because that was a convex function for that linear regression. So we were using that happily. But we said that we will not be able to use that same function as a loss function for logistic regression, because for logistic regression it doesn't turn out to be convex. So we need a function that turns out to be convex, and again, without like proving, this log based function turns out to be convex for the case of logistic regression. So we are going to use this logistic this function which is based on log, and it has two different cases, like for when prediction is 1 and for when prediction is 0. Now what we can do is we can simplify it. इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं बस. तो मैंने लॉस फंक्शन मिटा दिया, दोबारा लिखना पड़ेगा. दोबारा लिख पाइएगा. Loss function on whatever is equal to minus log f on w and d with xi if y is
is equal to 1 and minus log 1 minus FWB on xi if yi is 0. So this is our loss function, right? Please no noise, please no noise. अच्छा, ये वही लॉस फंक्शन है जो अभी हमने लिखा था. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट? इंस्टेड ऑफ हैविंग टू डिफरेंट केसेस, लेट्स मेक इट वन केस, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, राइट? आई डोंट नो वेदर व्हेन यू लुक एट इट यू फील लाइक आसान हुई है कि नहीं हुई, बट लाइक दैट्स राइट. सो हम इसी लॉस फंक्शन को दोबारा लिख रहे हैं किस तरीके से, yi, yeah, let's make it negative yi log FWB on xi, right? Yes, sir. And minus 1 minus yi log 1 minus FWB on xi. It's not raised to power, So it's it's superscript I, right? Yes, And sir. that's it. यही है ना? Yes, sir. अब इन दो केसेस को हमने इकट्ठा करके यहाँ एक स्टेटमेंट में लिख दिया, ठीक है? और हम ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये जो एक स्टेटमेंट है ये इन दोनों को साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है? अब देखिए, जब आप लॉस निकालेंगे किसी एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग एग्जांपल का, तो वो प्रेडिक्शन या 0 होगी या 1 होगी. फर्स्ट करें कि प्रेडिक्शन 1 है. अगर प्रेडिक्शन 1 है तो यहाँ 1 होगा केस में, लाइक जो आपका केस है अगर वो 1 है, तो जब आपका केस 1 है तो ये 1 होगी टर्म और ये टर्म इफेक्टिव होगी, बिकॉज ये 1 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है? ये 1 minus 1 0 हो जाएगी, तो ये टर्म काउंट नहीं होगी. ऑन द कॉन्ट्ररी, जब केस ये है कि 0 है आपका लेवल, उस केस में ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर ये टर्म 0 हो जाएगी, और ये 1 minus 0 1, तो ये वाली टर्म काउंट हो जाएगी. तो इफेक्टिवली आपने यही चीज यहाँ पे थोड़ी ट्रांसफॉर्म करके लिख दी है. फायदा क्या हुआ आपको? 2 की बजाय एक ही स्टेटमेंट के अंदर आपने इसको लिख लिया है, लेकिन ये दोनों को एडिक्वेटली रिप्रेजेंट करने की सलाहियत रखता है, राइट? ठीक हो गया जी. ये जो लॉस फंक्शन है, अब बेसिकली अब आप क्या करेंगे कि हर ट्रेनिंग एग्जांपल पे ये लॉस फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, और फिर आप क्या करेंगे, सम कर लेंगे और फिर एवरेज ले लेंगे, राइट? और एक और काम जो आप करेंगे वो ये है कि ये नेगेटिव है ना, और ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव बाहर ले आएंगे, तो ये सारे दोनों जो है ये पॉजिटिव हो जाएंगे. सो यू टुक नेगेटिव एज कॉमन, राइट? एंड दिस फंक्शन इज कॉल्ड maximum likelihood. This function is called Maximum likelihood. right? You can also call it like log based maximum likelihood. आप log based function calculate कर रहे हैं. We'll be talking about it a bit more, like as we move on. यानी 1 की जगह क्या होता है? 0 से 1 जीरो. हम बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. एक और बात याद रखें कि ये फंक्शन सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए, जिसमें 2 क्लासें हैं, 0 और 1, राइट? अगर आपकी क्लासें 2 से ज्यादा हो जाएं तो ये फंक्शन कारगर नहीं रहेगा. आपको मजीद नया, फॉर एग्जांपल देयर इज वन वेरी पॉपुलर फंक्शन फॉर मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टमैक्स. सो आपको और फंक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा. सो दिस इज कन्फाइंड टू बाइनरी क्लासिफिकेशन. वी कॉल इट लाइक मैक्सिमम लाइक्लीहुड, एंड दैट्स इट. कितनी सी बात है जी.